Hello everybody, welcome to the Fundamental Pharmacy. All GPAT Niper Drug Inspector Government Pharmacist aspirants. Today again I have come up with a new video for you. That is Cracker MCQ series part 11. We have already completed Cracker MCQ series part 1 to 10. फंडामेंटल फार्मेसी के आज के इस YouTube वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं क्रैकर एमसीक्यू सीरीज पार्ट 11 के बारे में। वी आर टेकिंग ए क्रैकर एमसीक्यू सीरीज एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 10 parts of that. Friends, this video is going to be very useful, knowledge oriented, very important for the exams. If you think the content of video is good, it is unique, then please hit the like to the video, share this video with your friends, subscribe the channel and press the bell icon so that whenever I will upload any new video on our channel, you will get an instant notification of it. Without wasting time, I would like to start the video. What is your first question of today's video? If a tablet weighing 300 mg, the percentage deviation allowed in weight variation test as per USP is, your options are option A 10%, option B 7.5%, option C 5%, option D none of the above. What is the weight variation limit for a tablet weighing 300 mg as per USP? एक 300 मिलीग्राम टैबलेट के लिए वेट वेरिएशन का लिमिट क्या है एज पर यूएसपी? तो उसका आंसर है, सो इन दिस क्वेश्चन योर आंसर इज ऑप्शन बी, that is 7.5%. So there are sequentially 3 questions and then I will explain what is next question. So if tablet weight is 80 milligram or less, then what is the percent deviation allowed as per British Pharmacopoeia? And your options are option A 5%, option B 10%, option C 15%, option D 7.5%. In this case also your correct answer is option B. Okay, don't worry, I will explain it. First of all, we will take a 3 MCQ because these 3 MCQs are the same. Question number 3, if a tablet is weighing 200 mg, then percent deviation for the weight variation is allowed in as per USP is, and your options are 5%, 10%, 15% and 7.5% again. Okay, you should know what do you mean by tablet. Tablet is nothing but the unit dosage form. Tablet क्या है? It is a unit dosage form made by compression or molding. ठीक है, tablet has a certain energy, we call it as a hardness. Okay, so tablet में hardness होता है. क्यों hardness क्यों होता है? क्योंकि tablet कैसे बनती है कि पाउडर को compress करने के बाद बनती है. ठीक है, तो उसमें hardness आता है. ठीक है, so it should have proper hardness within the limit. कि कम अगर हार्डनेस होगा तो जल्दी ही टूट जाएगी टैबलेट. जब भी आप टैबलेट बना के स्ट्रिप में या बॉटल में आप जब भी ट्रांसपोर्ट करोगे, अगर उसमें प्रॉपर हार्डनेस नहीं, कम होगा तो वो वहीं पे ब्रेक डाउन हो जाएगी. अगर ज्यादा है तो वो टूटेगी ही नहीं. ठीक है, तो हार्डनेस भी आपको लिमिट में होना चाहिए. सो देयर आर फ्यू टेस्ट फॉर द टैबलेट्स, लाइक टेस्ट फॉर द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ टैबलेट. So some tests are official test. They are official means what? They are given in the pharmacopoeias. Okay, various pharmacopoeias, Indian Pharmacopoeia, USP, BP, EP, IP, like that. Some tests are unofficial, means pharmacopoeia will not recommend this test compulsory. Okay, so those tests which are given in the pharmacopoeia, those are known as a official test, and those which are not given in the pharmacopoeia, those tests are known as a unofficial test. Okay, first of all, what are the official tests? So uniformity of content, or it is also known as a content uniformity, that is one of the official tests. Then again disintegration test is also official. Then dissolution test is also official. Dissolution test is also official. Then friability test is also official test. Okay, now we will see what are unofficial tests. So what are those? Like tablet thickness, then tablet hardness, organoleptic characters of tablet like size, then color, etc, etc. So all these are the unofficial tests. Okay, now let's come to the weight variation. So what is meant by weight variation? So suppose that your tablet is of 500 mg. So there is one limit decided by the pharmacopoeia that a 500 mg tablet should be within the range. Limit is known as a weight variation. Okay, it is
प्रेस्क्राइब्ड इन इंडिविजुअल मोनोग्राफ्स। ओके, सो जो भी ऑफिशियल बुक्स होते हैं जैसे आईपी हो गया, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ईपी यूरोपियन फार्माकोपिया, ये एक स्टैंडर्ड जो होता है टैबलेट वेट वेरिएशन के लिए वो उन्होंने प्रेस्क्राइब किए करके रखा है। इसके बाहर अगर टैबलेट का वेट गया तो दैट इज रिजेक्टेड। नाउ कम टू द पॉइंट। सो अगर टैबलेट का वेट एज पर आईपी एंड बीपी, इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया, उसके लिए जो लिमिट है वो देखते हैं अपन। अगर टैबलेट का वेट 80 मिलीग्राम है और उससे कम है तो वेट वेरिएशन का 10% अलाउंस किया जाता है, मतलब 10 प्लस माइनस 10%, दैट इज acceptable. Okay, if the weight of tablet is 80 milligram or less, then deviation allowed is plus or minus 10%. Okay, if the weight of tablet is around 80 milligram but less than 250, then it is the deviation allowed is 7.5%. If the weight of tablet is 250 milligram or more, then it is 5%. Okay, so जैसे जैसे weight of tablet का weight कम होता है वैसे वैसे deviation ज्यादा अलाउ करते हैं, क्योंकि जैसे ही टैबलेट का वेट कम होता है मतलब उसमें ड्रग भी कम होगा, ऑब्वियसली डेविएशन है वो ऑब्वियसली बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि मेजरमेंट करना और एक्यूरेट डोज डिस्पेंस करना उस टैबलेट में वो बहुत ही क्रिटिकल होता है। अगर टैबलेट में जो एक्टिव ड्रग है एपीआई है उसका अगर डोज कम है, मतलब 80 मिलीग्राम के नीचे इट इज नॉट इजी टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोज। ओके, सो हर एक टैबलेट में 80 मिलीग्राम के नीचे अगर ड्रग है, मान लीजिए कोई 10 मिलीग्राम का टैबलेट है तो उसमें इतना एक्यूरेट होना, इसलिए उसको ज्यादा डेविएशन दिया है। ठीक है, जैसे टैबलेट का वेट इंक्रीज हो जाएगा आपका परसेंटेज ऑफ डेविएशन कम होते जाएगा। ठीक है, ये हो गया अकॉर्डिंग टू द आईपी एंड बीपी। सो आईपी इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया, उसके लिए वेट वेरिएशन का लिमिट जो है वो सेम ही है, मतलब अगर 80 मिलीग्राम और उससे कम टैबलेट होगी तो 10% डेविएशन एक्सेप्टेबल है। अगर 80 मिलीग्राम टैबलेट है लेकिन 250 मिलीग्राम से कम है तो 7.5% डेविएशन एक्सेप्टेड है। अगर टैबलेट का वेट 250 मिलीग्राम है और ज्यादा है तो 5% डेविएशन लिमिट इज एक्सेप्टेड। ओके, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन यूएसपी में क्या होता है? यूएसपी में देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस एज पर द यूएसपी स्टैंडर्ड। सो एज पर द यूएसपी स्टैंडर्ड इफ टैबलेट इज हैविंग 130 मिलीग्राम वेट और लेस, then the percentage deviation allowed is 10%. If tablet is having 130 milligram to 324 milligram weight, then percentage deviation allowed is 7.5%. Okay, that is weight variation. If the tablet is having more than 324 milligram weight, deviation allowed is nothing but the 5%. Okay, so you must be clear about the IPBP limits and USP limits. Now come to the questions. So what was your first question? So your first question was, if tablet is weighing 300 milligram, percentage deviation in the tablet will be allowed as per USP, that is nothing but the 7.5%. You can see 300 mg means 7.5% limit as per USP. Okay, now we'll see next question. If tablet is weighing 80 milligram or less, then percentage deviation allowed as per BP. You can see 80 milligram or less. So what is the percentage deviation? 10%. That's why your answer is a 10%. Now we'll see next question. If tablet is weighing 200 milligram, then percentage deviation as per USP. Remember, यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड कौन सा दिया है उन्होंने। So as per USP, so you can see here 130 मिलीग्राम और लेस अगर वेट है तो 10% है, 130 मिलीग्राम से ज्यादा और 324 मिलीग्राम से कम मतलब कितना परसेंट है? 7.5%। अगेन यहाँ पे ऑप्शन देखो। सो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज this option D, 7.5%. Okay, if tablet is weighing 200 milligram or less, then deviation allowed as per USP is a 7.5%. Is that clear? ये तीनों MCQ they are interconnected to each other. अगर आपने ये चार्ट कर लिया IPBP के तहत लिमिट क्या है और USP के तहत लिमिट क्या है वेट वेरिएशन के लिए,
But now what is the significance of this weight variation test? Why we are doing this weight variation test for tablet? So no uniformity of dosage will be maintained over there, and that's why you have to follow the weight variation test for the tablet. Is that clear? यहाँ पे आपके 2-3 क्वेश्चन और हो जाएंगे, ठीक है। नाउ हाउ टू डू दिस वेट वेरिएशन टेस्ट, ये कैसे करते हैं, हाउ टू परफॉर्म वेट वेरिएशन टेस्ट। ओके, नाउ यू हैव टू टेक 20 टैबलेट्स रैंडमली, यू हैव टू टेक 20 tablets randomly and you have to weigh them, ठीक है। 20 टैबलेट लेना है आपको रैंडमली और हर एक टैबलेट का वेट करना है। तो आपका जितना भी एवरेज वेट है, जितना भी आपका थ्योरेटिकल वेट है, जैसे मान लीजिए आपका 500 मिलीग्राम वेट है टैबलेट का, तो आपको वे करना है एक टैबलेट 20 टैबलेट, ठीक है। उसका टोटल वेट करना है, उसका एवरेज निकलना है, और जो 20 टैबलेट आपने इंडिविजुअली वे किए थे उसमें से 2 टैबलेट, एक भी टैबलेट एवरेज वेट से बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, सो नॉट मोर देन 2 टैबलेट शुड बी आउटसाइड द लिमिट। सो विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज disintegration time for uncoated tablet as per the BP? Now we'll see the options. So 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Okay, now we'll take the next question. We will discuss answer later because all the sequential 3 questions will be on same topic. Okay, disintegration time for film coated tablet should be not more than, as per IP, your options are 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Okay, again next question, disintegration time for sugar coated tablet not more than, as per USP, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 60 minutes. Now what do you mean by disintegration time? So as I have already told you, tablet is nothing but the unit dosage form made by compression. So made by compression means compress करके टैबलेट बनाते हो, मतलब क्या, उसमें हार्डनेस आएगा, ठीक है। तो हार्डनेस आएगा तो उसको, जैसे आपने टैबलेट लिया, आपके स्टमक में उसको ब्रेक भी तो होना है ना। अगर वो ब्रेक ही नहीं होगा आपके स्टमक में, तो वो उसमें का एक्टिव इंग्रेडिएंट आपको कैसे मिलेगा, नहीं मिल सकता। तो उसको लिए ब्रेक होना जरूरी है, ठीक है। तो वो टैबलेट ब्रेक होता है या नहीं है, ये अपन लैब में चेक करते हैं, उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन टाइम, ठीक है। उसके लिए एक एपरेटस होता है, हर एक टैबलेट के लिए अलग अलग डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है। सो एवरी टाइप ऑफ टैबलेट हैज इट्स ओन डिसइंटीग्रेशन टाइम. Suppose that there are different type of tablet like uncoated tablet. Uncoated tablet means compressed tablet, then coated tablet, then film coated tablet, then enteric coated tablet, dispersible tablet, then fast dissolving tablet, then effervescent tablet, buccal tablets, etc., etc. So each tablet will have a different disintegration time. So disintegration test apparatus is there. So it will have 6 test tube. 6 test tube are mounted in the beaker. The temperature should be there. Temperature that is 37 degrees Celsius plus minus 2 degrees Celsius, that is maintained, and the apparatus is able to undergo at 28 to 32 cycles per minute, up and down. The movement of that apparatus is up and down, and it will be around 28 to 32 cycles per minute. Remember, okay. Now we'll see what are the disintegration time for different types of tablet. Your compressed tablet or uncoated tablet. If your tablet is compressed tablet or uncoated, then it should be break within 15 minutes. Uncoated tablet disintegration time is 15 minutes. For coated tablet, DT is for 30 minutes. Okay. For enteric coated, so enteric coated, for it is of 1 hour in 0.1 normal HCl, and then 1 hour in simulated gastric intestinal fluid, that means phosphate vapor. That's it. Okay. Then dispersible tablet, it should break within 3 minutes. Okay. Then oral dispersible means mouth dissolving tablet, it should disintegrate within 1 minute. For effervescent tablet, it should go in a solution within 5 minutes. Okay. For buccal and sublingual tablet, disintegration time is not applied. Okay. So disintegration time उसके लिए नहीं होता है जो चेवेबल टैबलेट से या फिर बक्कल टैबलेट से या फिर सबलिग्नल टैबलेट से. रिमेंबर, इसके लिए डिसइंटीग्रेशन टाइम का टेस्ट नहीं होता. किसके लिए? एक तो चेवेबल टैबलेट्स के लिए नहीं होता, बक्कल टैबलेट्स के लिए नहीं होता, सबलिग्नल टैबलेट्स के लिए नहीं होता. ठीक है, दैट क्लियर. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 वाज
what is disintegration time for uncoated tablet as per the BP? So it is nothing but the option A, 15 minutes. Now disintegration time for film coated tablet is not more than, that is the option is nothing but the correct option is nothing but the 30 minutes. Okay, uncoated tablet 15 minutes, coated tablet 30 minutes, film coated. Now sugar coated disintegration time is nothing but the 60 minutes. So for sugar coated tablet that is a 60 minute. Remember, disintegration time for sugar coated tablet is a 60 minute. Okay, compressed tablet or uncoated tablet it is a 15 minute. For film coated tablet it is a 30 minute. And for enteric coated tablet it is around 1 hour in a 1 normal HCl and 1 hour in a phosphate buffer. Is that clear? Now we'll see next question. Next question is for enteric coated tablets disintegration, which statement is true? Your options are: should not disintegrate in 0.1 normal AC in 120 minutes, should disintegrate in mixed phosphate buffer pH 6 at 60 minutes, then both of the above, and disintegration is not required. Which statement is true for the enteric coated tablet? Now in this case you should understand, आपको समझना चाहिए कि एंट्रिक कोटिंग क्यों करते हैं. सो व्हाई देयर इज नीड ऑफ एंट्रिक कोटिंग? क्या होता है कि सम ड्रग्स दे आर नॉट स्टेबल इन एसिड मीडियम, सम ड्रग्स आर नॉट स्टेबल इन एसिड मीडियम and they used to get deteriorated in the acid medium. For such a drugs tablet you need, the tablet should be break down in a intestine, not in a stomach. कि आपके पेट में ही उसको ब्रेक नहीं करना है, आप टेबलेट को उसको इंटेस्टाइन में ही करना है, क्योंकि पेट का जो आपका स्टमक का पीएच होता है दैट इज एसिडिक, आपका इंटेस्टाइन का पीएच होता है दैट इज बेसिक. ठीक है, अगर कोई ड्रग एसिड एनवायरनमेंट में स्टेबल नहीं है और बेसिक एनवायरनमेंट में इट्स ओके स्टेबल है, तो उस टाइम पे आपको वो टैबलेट आपके स्टमक में ब्रेक नहीं होने देना है. तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए करते हैं एंटरिक कोटिंग. सो देयर आर डिफरेंट एंटरिक कोटिंग पॉलीमर्स आल्सो, like your cap cellulose acetate phthalate, that is one of the enteric coating polymer. So वो क्या करेगा, एंटरिक कोटिंग करेगा ताकि वो टैबलेट पेट में आपके डिसॉल्व ना हो, डिसइंटीग्रेट ना हो. वो टैबलेट जैसे ही इंटेस्टाइन में जाएगा, जैसे ही वहां पे अल्कलाइन पीएच होगा, उस टाइम पे वो ब्रेक हो जाएगा, वहां पे ड्रग रिलीज करेगा. सो एंटरिक कोटिंग इज डन टू प्रिवेंट द ड्रग रिलीज इन स्टमक and to facilitate the drug release in intestine, because your intestine has a alkaline pH and your stomach has a acid pH. Okay, so for the enteric coated tablet disintegration, which statement is true? Should not disintegrate in 0.1 molar HCl in 120 minutes. Option B, should disintegrate in a mixed phosphate buffer pH 6.8. Then option C, both of the above. Option D, disintegration is not required. So in this case your correct answer is both of the above. Enteric coated tablet disintegration is done in two phases. First you have to use a medium of 0.1 molar HCl and you have to perform the test for 2 hours. In that test your tablet should not break. If you made enteric coated tablet, it should not break in a 0.1 molar HCl for 120 minutes. You have to operate a disintegration apparatus for 2 hours. In that your tablet should not be break. Now you have to discard that HCl and you have to take phosphate buffer pH 6.8, and in that the tablet should disintegrate in this at this pH medium in the 60 minutes. That is known as a enteric coated tablet. Is that clear? Now we'll see next question. Disintegration test apparatus moves up and down for dash per minute. Your options are 20 cycles, option B 28, 32 cycles, option C 22, 25 cycles, option D none of these. In this case your correct answer is option B. Disintegration test apparatus, it is designed in a such a way that the up and down process of that disintegration test apparatus, it will undergo 28 to 32 साइकिल्स पर मिनट. एक मिनट में उसका 28 से लेके 32 तक साइकिल्स कंप्लीट हो जाएगा. दैट इज अप एंड डाउन साइकिल्स. द मूवमेंट ऑफ दैट apparatus, अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ दैट apparatus, द apparatus इज कैलिब्रेटेड टू 28 to 32 मूवमेंट साइकिल्स पर मिनट. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन.
So USP type second dissolution apparatus is, your options are pedal type, basket type, flow through cell, cylinder type. So in this case your option A is the correct answer. Okay, so in case of USP type, first is a basket, type second is a pedal. They are exactly opposite to the they are exactly opposite to the IP. In IP, type first is a pedal, type second is a basket, and in USP, in case of USP, type first is a basket, type second is a pedal. Okay, we will see now what are the different we'll see later what are the different types of dissolution test apparatus. We'll see next question. Dissolution apparatus type first according to the Indian Pharmacopoeia is option A pedal type, option B basket type, option C both of the above, option D none of the above. So in this case option A is the correct answer. In this case your option A is the correct answer. Okay, now we'll see what are the different dissolution test apparatus. So USP type apparatus, what is USP type 1? That is known as a basket apparatus. What is USP type 2? That is known as a pedal apparatus. USP type 3 is known as a reciprocating cylinder. USP type 4 is known as a flow through cell. USP type 5 is known as a pedal over disc. USP type 6 is known as a rotating cylinder. USP type 7 is known as a reciprocating holder. Okay, so each apparatus will have a different rotation of speed. ये सभी apparatus के लिए different speed of rotation होता है, RPM होता है, और उनका यूज भी अलग अलग होता है. कोई इमीडिएट ड्रग रिलीज टैबलेट के लिए होता है, कोई सस्टेन रिलीज के लिए होता है, कोई एंट्री कोटेड रिलीज के लिए होता है, कोई एपीआई के लिए होता है, कोई ट्रांसडर्मल के लिए होता है. तो ये these things we will take in a next video. Might have discussed in previous videos also. So this was all about your today's 10 MCQs. Thank you very much for your time, and if anybody needs these kind of questions, those all questions are compiled in this Cracker Achiever book, and this fundamental of GPAT is nothing but your chapter wise notes and MCQs. It is a essence of different reference book, and I am happy to say you there was a 50 MCQs from this book only in 2021. अभी जो recently GPAT हुआ है उसमें इस बुक में से 50 MCQs होते. So there was a 50 MCQs from this book in latest GPAT exam. So if anybody needs this book, they can order from me. My numbers are given on the screen. Thank you very much.